When I look at the world around me, I see people. People who are comfortable. People who watch the time go by aimlessly. I see a city that makes years of human life pass by in a blink. I see people following other people into oblivion, and that's why I feel like an outcast. But here, in this wild, the question is, do I belong here? We all have experienced our many firsts. First day of school, first love, your first kiss, your first heartbreak and your first solo trip. This too is my first. A first adventure, a first love affair with the mountains, and a first with friends. We start our journey from Rishikesh, the spiritual capital of the world, and as we arrive here, this place is already covered in clouds. We wanted to not just explore but capture the essence of Rishikesh in pixels. And to be able to do that, we did not only cover the legendary spots like the jhulas, the ghats, the mandirs, but also some unexplored, untouched waterfalls. Here's how it went. I have heard a lot about Rishikesh, but its power, its energy, is beyond anything you could ever experience without actually visiting here. Now, before we left for our adventure beyond Rishikesh, we took the blessings of the holy Ganga Aarti and took to the roads. These roads remind me of you, your beauty. When I'm sitting inside this illusion of safety and I look outside, the breaking stones from the landslide, it all reminds me of your fury. These roads remind me of you and your beauty. क्या हो गया अनुराग, बीच रास्ते में रोकना क्यों पड़ा? कि विवेक को उल्टी लग रहा है और ये तक बोले बोतल तो पानी भर के लाते हैं। सबको आगे की सीट पे बैठना होता है। अरे लेकिन मेरे को मोशन सिकनेस है भाई। अरे हाँ, सो गए थे हम लोग सब कन्विंस है उससे। अरे निकलेगा जल्दी, बिरयानी खिलाएंगे, आ जा भाई। तेरे को देखो कैमरा में बोल रहे हैं, कैमरा में बंदा बोल रहा है। अरे मेरा पाकिस्तान से इम्पोर्टेड बिरयानी खिलाएंगे। चल और ये जीत हुई अनुराग भैया की, अमित भैया हार मान गए हैं।
We now start walking towards the base village before actually witnessing, experiencing what we came here to experience. This journey was full of surprises, difficulties, conversations. और 5 किलोमीटर है करने का अब हर 1 किलोमीटर में ब्रेक लेते हैं. The sound of roaring waters, jungle, and most importantly, waterfalls. अभी हम लोग गोविंद घाट में हैं और गोविंद घाट से हम निकल रहे हैं सुबह 8:53 घांगरिया में. घांगरिया 4 to 5 आवर्स का ट्रैक है यहाँ से. सो वी कंटिन्यूसली हैव टू वॉक अप हिल फॉर 5 आवर्स and then we stay in Ghangharia for the night and tomorrow early morning we leave for Valley of Flowers. हम लोग के पास ऑप्शन था 3 किलोमीटर गाड़ी से जाने का, लेकिन ये सारे लोग बोलते हैं नहीं, पैदल चलेंगे. Of course, गाड़ी से इतना दूर है यार, hundreds of kilometers. और कितना 3 किलोमीटर चल लेते हैं हैं ऊपर और गाड़ी तक जाना है तुमको. मुझे लगता है 1 किलोमीटर का ट्रैक भी नहीं. इससे ज्यादा तो लोनावला में ट्रैक हो जाए. यहाँ से हम लोग का ट्रैक चालू हो रहा है 10 किलोमीटर्स का गांगरिया तक. गांगरिया एक लाइक बेस विलेज है जहाँ से हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स जा सकते हैं. ये हम लोग का ग्रुप, ये है विवेकानंद, हाय बोलो, अमित भाई, हेलो, बजरंग हमारे सेठ जी, भिड़े. पूरा फॉग से कवर है, पूरा फॉग से कवर है. क्या है ये? बादाम श्योर. गोविंद घाट से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ. हम लोग ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स अपवर्ड्स ट्रैक कर चुके हैं. अभी हम जा रहे हैं घांगरिया. घांगरिया में हम आज रात स्पेंड करेंगे. कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए निकलेंगे. ये जो रास्ता है ये मॉडरेट है, बट हमने अपने बैग्स जो है हमने डिसाइड किया कि हम अपने बैग्स नहीं देंगे घोड़े पे. नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने बैग्स घोड़े पे डाल देते हैं और घोड़ा ऊपर पहुंचा देता है बैग्स. यू नो, इट्स नॉट अबाउट मनी. वी रियली डू नॉट लाइक any kind of behavior with animals. When you live in a city, you forget the challenges of the real world. The world was not created for your convenience. You don't have the protection of human engineering everywhere. In cities, you may have all the physical ease, the consolation of abundance, but here in the mountains, you have what we call the mental peace. I would trade off the comforts of my city life to have this mountain of peace. तो सुबह हो गई है और हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए निकल गए हैं. ये वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक का डे 2 चालू है अभी. और सुबह 8 बजे हम निकल चुके हैं अपने घर से नाश्ता करके और लंच पैक करके. और ये काइंड ऑफ स्टार्ट हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स. बट वैली ऑफ फ्लावर्स का एक एंट्रेंस है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नेशनल पार्क. रास्ता कैसा है? उबड़ खाप, मतलब रास्ता सेम है, ऐसे ही है ना? चलो थोड़ा आगे जाके जिगजैग को 1.25 किलोमीटर जिगजैग चढ़ाई है. वो जब लोहे के पुल पार हो. थैंक यू अंकल. ओके. We walk. We walk at our own pace. No coordination, no pace. Sometimes we talk. Sometimes we are just silent. We are all in awe of these beautiful mountains. We may have some trouble walking uphill and breathing at the altitude, but these beautiful visuals, these trails, we would trade off our city life, our grail of comfort, for these times and these visuals. We live to walk these mountains.
दिस हैज़ बीन अ प्रिटी डिफ़िकल्ट क्लाइंब क्योंकि यहाँ का ऑल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, अनुराग भैया वहाँ हैं, रास्ता कैसे है देखो। तो आप ये डेली ट्रैक करती हैं? हाँ जी, हम यहाँ डेली करते हैं ट्रैक, क्योंकि हम यहाँ पे जो फूलों की गुड़ाई निराई का काम है वो करने आते हैं। फूलों का गढ़ाई का काम क्या होता क्या एग्जैक्टली? और फूलों के बीच में जो घास होती है जो कि फूलों को खराब करती है, हाँ। हम उसकी छटाई करके उसको हटाते हैं। ओ, तो आप लोग वैली ऑफ फ्लावर्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हो? हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह ने भी वहाँ पे ग्रंथ लिखी थी, 7 पर्वतों के बीच में सरोवर होगा, उसके पास में तपस्या करूँगा। It is going to be amazing. We are finally at the Valley of Flowers. I most definitely do not belong to the swarming cities, but the question that I've been asking myself as I walk, absorb, meditate and appreciate these terrains, do I belong here? I think I know the answer, and I think you know it too.